हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज़ जहाँ पे हम लोग कुछ केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे एंड उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके रिगार्डिंग सारे थ्योरीज जो है और जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। See this question: a child presents with bone pain as well as with hepatosplenomegaly and a trephine biopsy शो एंड एन एस्पिरेट शोज द फॉलोइंग फाइंडिंग्स। ठीक है, यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है, सो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। पहले समझते हैं कि यहाँ पे कौन सा पिक्चर दिया हुआ है, व्हाट इज़ अ बायोप्सी एंड व्हाट इज़ एन एस्पिरेट, उसको एक अंदर का जो डिफरेंस है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्लिनिकल फीचर्स और इसका डायग्नोसिस में। फर्स्ट लेट्स मूव ऑन टू बायोप्सी एंड एस्पिरेशन। तो एस्पिरेशन का मतलब इट्स काइंड ऑफ सिमिलर लाइक विड्रॉइंग द ब्लड। ठीक है, सो देर इज़ अ नीडल एंड देर इज़ अ सिरिंज दैट इज प्रेजेंट। सो इन अ बोन मैरो a bone is selected और उसके अंदर में it creates a hole and it withdraws the bone marrow. So that is a bone marrow aspirate, and the needles that is used for this very purpose is two needles, and one is this Klimas needle and other is the Salas needle. वन इज़ द क्लेमास नीडल, अनदर इज़ द सालास नीडल। अगर तुम दोनों के अंदर डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो, यू विल लुक एट द स्क्रू पोजिशन। सालास नीडल में स्क्रू का पोजिशन इज ऑन द साइड एंड क्लेमास में द नीडल द स्क्रू का पोजिशन इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडिनल स्क्रू। दैट मीन्स इन क्लेमास नीडल वी हैव अ लॉन्गिट्यूडिनल स्क्रू एंड इन द सालास नीडल वी हैव अ साइड स्क्रू दैट इज प्रेजेंट। तो इसके बेसिस में वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ द needles. And on bone marrow biopsy, basically there is a needle and you can see this needle is basically called as the trephine needle or the Jamshedis needle. इस needle का नाम क्या है? trephine needle या फिर Jamshedis needle, and it is T in shape. तो यहाँ पे जो नीडल है, दिस इज इंसर्टेड एंड इट इज़ बेसिकली इनटू द बोन मैरो एंड इट इज़ देन रोटेटेड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टू बेसिकली विड्रॉ पोर्शन ऑफ द बोन। उसके बाद उसको एसेस किया जाता है, उसके अंदर में कैसा स्टडीज़ है, ऐसा पिक्चर आ रहा है इन दिस पेशेंट। ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बोन मैरो बायोप्सी। और यहाँ this thing is done on which kind of bones? This is mostly done in the posterior superior iliac spine in majority of the cases पे, but कभी कभी क्या होता है, like the person is obese, so in that case anterior superior iliac spine is chosen for that very same reason. और children में क्या होता है, it is very difficult to in a little baby, a infant, a newborn baby, so it is very difficult for that person for the newborn baby to be pushed to the lateral position. ठीक है, तो because of that very reason उन लोगों में posterior superior iliac spine या फिर anterior superior iliac spine चूज़ नहीं किया जाता। उन लोगों में बोन बायोप्सी कहाँ पे किया जाता है? इट इज़ डन इन द tibial tuberosity। ठीक है, तो tuberal tuberosity it is done in case of infants as well as in case of paralyzed people. So in case of normal people, the bone marrow aspiration or biopsy is done in a posterior superior iliac spine. In case of an obese person, it is done in an anterior superior iliac spine, whereas in case of an infant or a paralyzed person, it is done in the tibial tuberosity. ठीक है, सो दैट इज़ फॉर बोन मैरो बायोप्सी और एस्पिरेशन की। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में क्या निकाल के असेस करें, तुमको वो भी तो समझ में आना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। बाय द वे इट इज़ नॉट रियली इन द फर्स्ट ईयर सिलेबस, बट जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंड इट। तो पर्सन प्रेजेंटेड विद अ बोन पेन एज वेल एज हेपाटोस्प्लेनोमेगाली। अगर तुम यहाँ पे एस्पिरेट का देखोगे, यू विल सी अ कैरेक्टरिस्टिक दिस appearance is called as a crumpled tissue paper। ऐसे ना टिश्यू पेपर लेके अगर तुम क्रम्बल करोगे तो ऐसा दिखेगा ना, तो दैट वेजेस एंड और पोर्शंस वो फोल्डिंग्स एंड ऑल दिख रहा है ना, तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ टिश्यू पेपर और क्रम्बल टिश्यू पेपर अपीयरेंस। तो क्रम्बल टिश्यू पेपर अपीयरेंस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ द गॉचेस डिजीज। मतलब क्वेश्चन में और कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, इन द बायोप्सी यू कैन सी योर क्रम्बल टिश्यू पेपर अपीयरेंस। ओके, सो दिस डिजीज़ इज़ द गॉचेस डिजीज़। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स में गॉचेस डिजीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ अ स्पिंजोलिपिडोसिस दैट यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड एंड रिटन इट, बट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? इट इज़ अ लिपिड्स लाइसोसोमल, इट इज़ अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। मतलब
a particular product is being getting formed, so it has to be degraded, like a metabolic product has to be degraded. So because of this absence of its lysosomal enzymes, the product is not getting degraded and getting accumulated over time. This sphingolipids is getting accumulated, so that is why the disease name is sphingolipidosis. मोस्टली द डिजीज़ आर ऑटोसोमल रिसेसिव इन नेचर, जेनेटिक डिजीज़ होता है, और बाकी थोड़े थोड़े चीज़ों में डिफरेंसेस भी है, लाइक नॉट ऑल आर ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड वी विल अंडरस्टैंड इट फादर एज वी गो। लाइक पूरा स्पिंडोलिपिडोसिस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली तो समझ लो कि द एंजाइम दैट इज डिफेक्टिव हियर इज बीटा glucocerebrosides. Understand, it is beta glucocerebrosides and not galactocerebrosides. It's glucocerebrosides and beta also, because हम लोग अल्फा, फिर glucocerebrosides, फिर glucosidase, फिर ऐसा एंजाइम करके अगर ऐसा एंजाइम नेम करके जो डेफिशिएंस होगा उसका भी डिजीज़ होता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। सो pay attention to the name. It is beta as well as glucocerebrosides, ठीक है। So what exactly it is used for? It is used for the in a reaction में it is beta glucocerebroside. It glucocerebrosides नाम में ही समझ में आ रहा है, it will break down something. What? It will break down beta glucocerebroside into cerebroside. So it breaks down this. So what is getting accumulated? You can understand that beta glucocerebroside is getting accumulated. Why? Because of the deficiency of beta glucocerebrosides. ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या रहता है? अ कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर्स इज हेपाटोस्प्लीनोमेगाली एज वेल एज बोन पेन, ठीक है। हेपाटोस्प्लीनोमेगाली का मतलब क्या? दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। हेपाटोस्प्लीनोमेगाली मतलब बोथ लिवर एज वेल एज द स्प्लीन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ द बेबी, इट इज गेटिंग एनलार्ज्ड, ठीक है। सो बोथ लिवर एज वेल एज स्प्लीन इज गेटिंग एनलार्ज्ड, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड इन दिस। नेक्स्ट देयर विल बी बोन पेन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, मतलब डिजीज की वजह से फ्रैक्चर है, मतलब ऐसा नहीं कुछ ट्रॉमा हो रहा है एंड देन फ्रैक्चर इज ऑकरिंग, दैट इज अ नॉर्मल फ्रैक्चर, राइट। बट दिस इज अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, मतलब कुछ एंजाइम डिफेक्ट है, कुछ पैथोलॉजिकल डिजीज है, उसकी वजह से देयर इज अ fracture that is occurring. So this is a pathological fracture, and there won't be any cherry red spots. Cherry red spots आगे जाकर भी देखेंगे, like what exactly it is. For now just read that there is no cherry red spots and no mental retardation. Mental retardation क्यों नहीं होता? क्योंकि glucocerebrosides is present in the extra neuronal tissue. तो मतलब ये न्यूरॉन के कोई टिश्यू में प्रेजेंट ही नहीं है, तो कैसे न्यूरोलॉजिकल डैमेज होगा? नहीं होता है। तो दैट इज वाई देयर इज नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एज सच। उसके बाद देर इज़ अर्लिन फ्लैश डिफॉर्मिटी, मतलब अगर हम किसी पर्सन का विथ गॉचेस डिजीज़ एक्सरे देखेंगे, सो दिस इज़ हाउ द पिक्चर विल लुक लाइक। मतलब तुम अगर ध्यान से देखो, नॉर्मली कैसा होता है? स्ट्रेट होता है ना, मतलब नॉर्मल लोगों का एक्सरे ऐसा नहीं होता है, राइट। इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व टूवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द फीमर, इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस, है ना। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ फ्लास्क शेप्ड अरेंजमेंट। सो दैट इज़ वाई this characteristic finding is called as Erlenmeyer flask deformity, flask, ठीक है। सो सिम्टम्स में अगर तुमको कहीं भी हेपाटोस्प्लीनोमेगाली, बोन पेन दिखता है, अर्लिनमेयर फ्लैश डिफॉर्मिटी दिखता है, एंड ऑल्सो इफ यू फाइंड अ कैरेक्टरिस्टिक क्रम्बल टिश्यू पेपर अपियरेंस, बी श्योर दैट इट इज़ अ गॉचस डिसीज, ठीक है। और यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता है, एज वेल एज चेरी रेड स्पॉट्स इज एब्सेंट। चेरी रेड स्पॉट्स इज एक्चुअली प्रेजेंट इन वन टाइप ऑफ गॉचस डिजीज, दैट इज अ स्यूडो गॉचस डिजीज, मतलब इट्स नॉट अ रियल गॉचस डिजीज। वो आगे जाकर भी पढ़ेंगे, नॉट इन दिस वीडियो बट वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। Now, as अगर बोन मैरो एस्पिरेट करोगे, so you will find a crumpled tissue paper appearance and eccentric nucleus. As I have said, I have written it here. Now, treatment के बारे में you will do enzyme replacement therapy. मतलब एक एंजाइम का एक सबस्ट्रेट का accumulate हो रहा है. Either you will try to supply that substrate less through the diet, or you will try to replace that enzyme, right? So this is enzyme replacement therapy, or you will try to avoid the buildup of beta glucocerebroside, right? So next this is for Gaucher's disease, enough, more than enough. So next let's try to compare it with other diseases of this same category of sphingolipidosis. Like अगर हमको कोई सेम क्वेश्चन अलग तरीके से आया, लाइक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आया इन द सेम कैटेगरी, हाउ विल बी डायग्नोस इट? तो डिफरेंसेस भी पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट डिजीज विल स्टडी इज द क्रेबेज डिजीज। क्रेबेज डिजीज में एंजाइम डिफेक्ट होता है, दैट इज बीटा galactocerebrosides, मतलब दिस इज बीटा galactocerebrosides. रिमेंबर दिस इज galactocerebrosides. Gaucher's disease is glucocerebrosides. So this converts beta galactocerebrosides into cerebroside into
cerebrocyte, right? So there is an accumulation of beta galactocerebrocyte because of the deficiency of beta galactocerebrocytase. गॉचेस डिजीज में बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसाइटिस, क्रेविस डिजीज में बीटा गैलेक्टोसेरेब्रोसाइटिस, याद रखना। तो सिम्टम्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेरी रेड स्पॉट्स वी विल ऑब्जर्व। सो वन डिफरेंस फ्रॉम द गॉचेस डिजीज, चेरी रेड स्पॉट्स इज ऑब्जर्व्ड हियर। चेरी रेड स्पॉट्स क्या होता है, मतलब तुम अगर फोकस करके देखोगे यू विल फाइंड in the retina you will find this reddish spot and that is called as a cherry red spot, kind of look like that, like cherry कैसे लाल रंग का होता है ना, so that is a cherry red spot. Opisthotonous position, what is opisthotonous position? That is ऐसा arched back वाला position होता है ना babies का, because of bony deformities and all that thing, so this arched back appearance is called as the opisthotonous position. यहाँ पे क्या कहीं भी लिवर या फिर स्प्लीन का एनलार्जमेंट देख रहा है, नहीं, राइट? सो देर इज नो हेपाटोस्प्लीनोमेगाली। अनदर डिफरेंस, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट यहाँ पे होता है, क्यों? बिकॉज बीटा गैलेक्टोसेरेब्रोसाइटिस इज प्रेजेंट इन द न्यूरोनल टिश्यू। अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट इज वन कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ दिस डिजीज इज द ग्लोबॉइड बॉडी इंक्लूशंस। लेट्स सी दिस पिक्चर। यहाँ पे तुम देखोगे लाइक देर इज inclusion that looks like a circular or a globe, right? That is the globoid body inclusion, which is nothing but actually a macrophage that is present. So this is the one that is responsible for the damage of the neuronal tissue. So and the treatment is again the enzyme replacement therapy. More or less the treatment is similar in all the diseases that I am going to discuss now. Okay, so again, if you ever find a person that has cherry red spots in the opisthotonous position, and if you a characteristic finding that is the neurological defects and globoid body inclusion, then that is definitely a Graves disease. Okay, that's it. Next we will move on to GM1 gangliosidosis. What is GM1 gangliosidosis? So in this case we have a defect in beta galactosidase. अगेन एंजाइम का नाम है, ध्यान दो, बीटा गैलेक्टोसिडेज। गॉचेस डिजीज में बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज, क्रेबिस डिजीज में बीटा गैलेक्टोसेरेब्रोसिडेज. दिस इज, देयर इज नो सेरेब्रो हियर, दिस इज बीटा गैलेक्टोसिडेज enzyme defect. Okay, remember this. So in this reaction, GM1 ganglioside is converted into GM2 ganglioside. That is why it's a GM1 gangliosidosis. Why? Because there is an accumulation of GM1 ganglioside. So because of the deficiency of beta galactosidase, there is an accumulation of GM1 ganglioside here. Okay, let's move on to the symptoms. If you observe the symptoms, cherry red spots is observed here. In majority of the diseases that I am going to discuss, again cherry red spots would be a characteristic finding. Like it will be found in a number of diseases. और जहाँ पे नहीं found होता होगा, that is again a very crucial finding. So again there would be neurological defect and frontal bossing would be observed. Frontal bossing का मतलब कि this is the frontal bone, right, in the forehead. So this becomes enlarged. That is the frontal bossing. This you can see that is the forehead is enlarged. That is why this is frontal bossing. Again, if you see, it will then depressed nasal bridge and low set of ears. If you observe that the nasal bone is a bit depressed, like it's not like the normal nasal bone that is present, and also the set of ears is low set of ears. So a characteristic finding अगर तुमको GM1 ganglioside का देखें, that is would be the frontal bossing as well as low set of ears and depressed nasal bridge. Okay, so अगर ऐसा दिया होगा तो you can understand that is a beta galactosidase enzyme defect, that is GM1 ganglioside. Majorly question नहीं आता है यहाँ से. The next is the GM2 gangliosidosis. So GM2 gangliosidosis is again a very important thing. So the enzyme that is defect here is hexaminidase. Not really similar to the other names we study, so you can remember it easily. Hexaminidase का मतलब ऐसा नहीं पढ़ा है पहले, तो GM ganglioside. ठीक है. Hexaminidase can be of two types, that is A and B types. और A type में there is one alpha and one beta subunit, whereas B type में there is two beta subunit. So again, let's come. Hexaminidase is of two types, A and B. If it is A type, it is one alpha, one beta subunit. If it is B type, there is two beta subunits. Okay. Next, again, see the name. It is GM2 gangliosidosis. That means there is accumulation of GM2 ganglioside. The GM2 ganglioside in the presence of hexaminidase will basically convert GM2 ganglioside to GM3 ganglioside. Done. So
इसके अंदर में there is two diseases, like it's a GM hexaminidase A and B it's present, so there is two diseases, one is Tay Sachs disease, another is the Sandoff's disease. अगर Tay Sachs disease की बात करेंगे, there is only deficiency of hexaminidase A, okay, defect in hexaminidase A. Whereas if we talk about Sandoff disease, there is defect in both hexaminidase A as well as hexaminidase B. तीन सिम्टम्स जो Tay Sachs डिजीज में याद रखना है, दैट इज चेरी रेड स्पॉट्स, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट एंड हाइपरएक्यूसिस. हाइपरएक्यूसिस का मतलब सपोज एक नॉर्मल से लाइक तुम बात कर रहे हो, लाइक नॉर्मल आवाज़ है, सो यू वॉन्ट रियली फाइंड इट मच डिस्टर्बिंग, बट अगर किसी और को दैट इज फाइंडिंग इट वेरी लाउड, देन दैट इज कॉल्ड हाइपरएक्यूसिस. मतलब अ नॉर्मल decibel of sound is being unbearable for a person or making it sound as if it is very loud when it is actually not. That is called as hyperacusis. So that is a kind of defect that will be present in Tay Sachs disease. That's a very characteristic finding. Again, like hyperacusis किसी भी डिजीज में जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, you will not find. So hyperacusis में होता है, then that is a characteristic finding of Tay Sachs disease. But it can be also be present in Sandoff disease. Sandoff disease में has all the features of Tay Sachs disease, and additional to that तीन और features है, that is cardiac, बोनी डिफेक्ट्स, हेपाटोस्प्लेनोमेगाली. मतलब हेपाटोस्प्लेनोमेगाली Tay Sachs डिजीज में एब्सेंट था. ठीक है. सो अगेन कम विथ मी, Tay Sachs डिजीज, सैंडोव्स डिजीज. कहाँ पे डिफेक्ट है? एक्सामिनेडेज ए, एक्सामिनेडेज ए एंड बी बोथ. व्हाट आर द डिफेक्ट्स? हाइपरएक्यूसिस, चेरी रेड स्पॉट्स, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट. सैंडोव डिजीज में Tay Sachs डिजीज का प्लस बोनी डिफॉर्मिटीज, कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज, हेपाटोस्प्लेनोमेगाली. ओके, वी आर डन एंड डस्टेड विद द GM2 गैंग्लियोसिडोसिस. नेक्स्ट कुछ थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिजीजेस है, लेट्स मूव ऑन विद इट. और पिक्चर्स को अच्छे से देखना. लाइक मैंने जो फर्स्ट ईयर में गलती की थी, लाइक आई टोटली कंसंट्रेटेड ऑन माई थ्योरी पोर्शन. लाइक उतना अच्छे से कैसे पेशेंट कैसे देखता है, फाइंडिंग्स कैसे बनते हैं. लाइक इफ यू स्टडिंग एनी डिजीज, ट्राई टू सर्च इट अप. लाइक ग्लोबॉइड बॉडी इंक्लूजन को सर्च करो, बार बार देखो वो कैसे दिखता है, कंबल टिश्यू पेपर अपीयरेंस कैसा दिखता है, हेपाटोस्प्लेनोमेगाली का पेशेंट कैसे दिखता है. जैसे कि तुमको डायरेक्टली अगर सामने से ऐसा कोई आए ना पेशेंट, तो तुमको समझ में आ जाए कि इसको ये है. ओके, सो ऑलवेज सर्च फॉर पिक्चर्स. तो Niemann-Pick's disease, there is a defect in the enzyme sphingomyelin, so there is definitely accumulation of the sphingomyelin. Understandable. ACE का मतलब क्या होता है? Breaks down. Easy. Symptoms, there would be again cherry red spots that will be present in the eyes as well as the zebra body inclusions. See, it kind of looks like a zebra. Like these people are very creative in naming the stuff, right? So zebra body, like it looks like a stripes of a zebra. Very gorgeous crumpled tissue paper. So these are very innovative names. They underwent large deformity. Why? Because it looks like a flask, right? The bony defect. So always try to see. So this is a zebra body inclusion that is present. So अगर zebra body inclusions होगा, straight away mark Niemann-Pick's disease. It can't be any other thing. ठीक है. And cherry red spots also present. ठीक है. Farber's disease, again अगर तुम enzyme defect की बात करो, acid ceramidase. Symptoms, you will find that is swollen joints. It kind of resembles the rheumatoid arthritis. No, it's not rheumatoid arthritis, but it's like a rheumatoid arthritis. Take it. Right? Because arthritis is also an autoimmune disorder where the joints get swollen. So यहाँ पे तुम अगर पिक्चर में भी देखोगे, there are swollen joints that is present. ठीक है. But this is an enzyme defect. So you have to differential diagnose it. Like कैसे Farber's disease और rheumatoid arthritis को तुम differentiate करोगे, right? So in that case you would need to perform biochemical tests to find out that acid ceramidase, yes, it is defective. ठीक है. Next अगर Fabry's crisis के बारे में बात करेंगे, Fabry's disease के बारे में बात करें, तो enzyme defect is alpha galactosidase. Again, come with me. Gaucher's disease, alpha glucocerebrosidase. Krabbe's disease, alpha galactocerebrosidase. GM1 gangliosidosis, alpha galactosidase. Beta galactosidase. I guess I said alpha, right? So those will be beta, right? So Fabry's disease, there will be alpha galactosidase. So again, come with me. Gaucher's disease, beta glucocerebrosidase. Krabbe's disease, beta galactocerebrosidase. GM1 gangliosides, beta galactosidase, and Fabry's disease, alpha galactosidase. ठीक है. Always remember and focus on the enzyme name that is given. Then symptom क्या होगा? Fabry's crisis. Fabry's crisis. What is Fabry's crisis?
इट्स नथिंग बट द पेन्स इन द प्रॉक्सिमल जॉइंट्स, ठीक है, मतलब शोल्डर पेन, एल्बो पेन, सो प्रॉक्सिमल जॉइंट्स में पेन अगर होता है तो दैट इज कॉल्ड एज फैब्रिस क्राइसिस. एंड ऑल्सो देर इज अ मल्टीस क्रॉस अपीयरेंस इन द यूरिन, मतलब यूरिन में तुम यू विल फाइंड सेडिमेंट्स, एंड अगर माइक्रोस्कोपी में देखोगे इस काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस क्रॉस, ठीक है. सो Maltese क्रॉस, दिस इज कॉल्ड एज Maltese क्रॉस, बट दिस इज नॉट अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग, मतलब अदर डिजीजेस में ये दिस कैन बी ऑब्जर्व. सो बायोकेमिकल टेस्ट करके असेस करना पड़ेगा कि इट इज़ अल्फा गैलेक्टोसिटिस डिफेक्ट, ठीक है. सो अगेन थोड़ा सा रिकैप करते हैं अबाउट ऑल द लाइसोसोमल डिजीजेस दैट वी हैव स्टडीड. इसको ढक के बोलो, GM1 गैंग्लियोसाइड. अच्छा पहले देख लो, GM1 गैंग्लियोसाइड, बीटा गैलेक्टोसिटिस, टेसेक्स डिजीज, बीटा हेक्सामाइनिडेज ए, बीटा हेक्सामाइनिडेज ए एंड बी अगर बोथ होगा तो सैंडॉक्स डिजीज. क्रेबेज डिजीज, बीटा गैलेक्टोसिरेब्रोसाइटिस. नीमैन-पिग्स डिजीज, पिंजोमाइलिनेज, गॉचर्स डिजीज, ग्लूकोसिरेब्रोसाइटिस, ग्लूको. Metachromatic leukodystrophy, it has been added, you might remember it or need not remember, it is aryl sulfatase A. Farber's disease, ceramidase. Wolman's disease is another extra one that has been added, it is acid lipase defect, ठीक है, ये remember कर सकते हो. An acid lipase defect, and there would be, this is a kind of there would be adrenal gland calcification here, मतलब adrenal gland में there would be calcification, and also there would be watery green diarrhea, ठीक है. This would be the characteristics findings of Wolman's disease. You might or might not remember. Just remember that acid lipase is defective. Next is Fabry's disease. Again, alpha galactosides. जो तुमको बेसिकली कंफ्यूज करेगा ना वो यही है, GM1 गैंग्लियोसिडोसिस, क्रेबेज डिजीज, गॉचर्स डिजीज एंड फैब्रिस डिजीज. सो इसको अच्छे से समझ लेना. अगेन गॉचर्स डिजीज, ग्लूकोसिरेब्रोसिटिस, क्रेबेज डिजीज, बीटा गैलेक्टोसिरेब्रोसिटिस, GM1 gangliosides, beta galactosides, and Fabry's disease would be alpha galactosides. And और जो चीज़ों में तुमको कन्फ्यूजन हो सकता है दैट इज़ फैब्रिस डिजीज एंड फार्बर्स डिजीज, राइट. इन दोनों में से तुमको कन्फ्यूजन हो सकता है. तो इसको अगर रिमेंबर करने की एक ट्रिक मैं बताऊँ, दैट इज़ फार्बर्स डिजीज़. यहाँ पे फार्बर्स ई आता है, तो सेरामिडेज में भी ई आता है. सो रिमेंबर दैट फार्बर्स डिजीज इट फॉर सेरामिडेज डिफेक्ट, वेरस फैब्रिस डिजीज में कोई भी ई नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी लास्ट में ई आ रहा है, बट जस्ट इग्नोर दिस. तो गैलेक्टोसिडेस में एसिड, गैलेक्टो में कोई ई नहीं आ रहा है, सो रिमेंबर इन दिस मैनर. तो फार्बर्स डिजीज में ई आ रहा है तो सेरामिडेज, सो सी. ठीक है, दीज आर सम लिटिल टिक्स विच विल हेल्प यू रिमेंबर. सो फिर से अगर हम थोड़े एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं, दैट इज ऑल आर ऑटोसोमल रिसेसिव. रिमेंबर ओनली फैब्रिस डिजीज इज द वन दैट इज X-linked recessive. All the other diseases that we have discussed here are autosomal recessive, except Fabry's disease. All have mental retardation. तुमने अगर नोटिस किया होगा, neurological defect would have been present in every one of the cases I have discussed, except Gaucher's disease. Why? Because beta glucocerebrosidase is present in the extraneuronal tissue and not in the neuronal tissue. All have cherry red spots except Gaucher's and Fabry's disease. Again, cherry red spots I would have discussed in everyone. Cherry red spot is present in pseudo Gaucher's disease but not in Gaucher's disease, as well as in Fabry's disease it is absent. तो अगेन जो पिक्चर्स है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज दिस इज अ क्रम्बल टिश्यू पेपर अपीयरेंस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गॉचर्स डिजीज. तुम एक बार वीडियो को पॉज करके यू ट्राई टू आंसर कि ये सब चीज़ें क्या क्या है, ठीक है. तो आई विल ऑल्सो से this is crumpled tissue paper appearance, characteristic feature of Gaucher's disease, as well as this one that is the Erlenmeyer flask deformity, kind of looks like a flask. Next is cherry red spots, kind of present in every one of them except Gaucher's and Fabry's disease. This is the globoid body inclusions that will be present. This is the zebra body inclusions and the Maltese cross appearance, right? तो बोलो कहाँ पे मिलेगा ये globoid body inclusions? Globoid body inclusions in the Krabbe's disease, zebra body inclusions in Niemann-Pick's disease, Maltese cross appearance among the diseases that we have discussed, Fabry's disease. Fabry's disease किस एंजाइम का डिफेक्ट है? अल्फा गैलेक्टोसिडेज. फार्बर्स डिजीज का ई, सेरामिडेज, एसिड सेरामिडेज, ओके.
तो दिस इज़ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। लाइक वी विल कीप ऑन कमिंग विद सच केस स्टडी वीडियोस। थैंक यू। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कमेंट में बताना कि कैसा लगा, और अगर तुम लोग को कोई ऐसे तरह की वीडियोस पसंद आती है तो वो भी बताना कि किस टाइप की वीडियोस हम लोगों को बनानी चाहिए। थैंक यू।